Okay, so Minikube helps us to create a local version of Kubernetes cluster on your machine. That is Minikube. So generally, what we do, we create Kubernetes cluster. We create Kubernetes clusters on cloud platforms like AWS. AWS has something called EKS, right? GCP has something called GK, and every cloud provider is providing managed Kubernetes as a service, right? Now, but we don't deploy everything cloud, right? We have to do some test locally as well. Let's say I'm a developer. I need to test how my deployment looks like, how my YAML file is going to work, that is going to require cloud, right? So for all those kind of testing for the local development flow, we use something called local Kubernetes, and Minikube helps us to create a local version of Kubernetes on that. Is it clear? Okay. So you can just note down this GitHub URL, right? It is github.com/DockerDev day 2. And beside that, there is just one repository. Over there, I have provided the links to install all these components. You can refer to them whenever you are going to refer in your free time. And so, I think, yeah, it's, if you want to share. So, let's begin. And okay, so for the demonstration, we are going to use a simple to-do list application. For the demonstration, we are going to use a simple to-do list application, which was available open source on GitHub, right? And we are just going to use that. Okay. So, first, let's say I want to build this to-do list application. Okay. How many of you know what is Dockerfile? You know what is Dockerfile? Okay. All right. Can any answers? It is used to create Docker images, right? It's basically a template that how your Docker image would look like and what all things would be inside the particular Docker image, right? Cool. So let's first build this Docker image, right, of this to-do list application and see that how it looks like and how do we execute it. Okay. All those who are doing along with me, you can just refer to the screen. You can create a temporary folder, and you can just copy these steps. What is the first step? We are doing git clone, and we are writing these 3 lines inside a Docker file, and then we are running Docker build command and Docker run command. Very simple things. Yes, nothing fancy. We are just cloning on existing available Git repository. We are creating a Docker file. We are building a Docker image and we'll run it. So let's just execute it. So, is the to-do list application running now on my local? Are you guys with me? Yes or no? Any one of you want me to repeat? Are you guys with me? Understood what we did? I'll repeat. Okay. So what we did is we did git clone to an existing available to-do list application on GitHub. Okay. We created a Docker file with just 3 lines from HTTPD. We are using the normal HTTPD image as a base image. We are copying the contents and exposing on AT. That's it. Third command, we are doing Docker build. It means we are building a Docker image from a Docker file. Yes. And the fourth command is Docker run. Okay. I executed this commands, and now this to-do list application is running on my local machine on port 81. Yes or no? Understood till here what we did? Everyone? Okay. Now,
It means I have an application. Let's say I'm a developer. I develop this application on my local machine. Now I have to deploy it inside a Kubernetes. Okay, with the help of a helm chart. Now, how does a helm chart looks like? Okay, so if you clone this, it's important that whenever you are referring to this, you clone this repository, and over here you will see this folder helm chart sources, simple helm chart. Okay, and inside that templates folder, you will see two files, deployment.ynl and service.ynl. Sure. Is it okay? Is it okay now? Okay. So this is how a deployment template would look like. Over here, you will see that. The YAML file is as per the definition of how a deployment would look like, but there are no hard-coded values over here. Instead, we are fetching something called .values and .values, etc. This is how a helm chart is written. So maybe we are not going to go deep in how to write a helm chart and stuff, right? But just to give you a brief idea, helm chart, this is a template of inside a helm chart where nothing is hard coded. You will see everything as parameterized. Yes or no? Okay. Now, let's say I have this helm chart and I have created a helm repository. Okay. There is always a helm, not necessarily always a helm repository, different people can refer to the local helm charts as well. But larger organizations, let's say if you want to deploy any other tool, right? They are not giving you the exact helm chart file, but instead the chart is based on something called helm repository over that link. You can refer that URL to deploy your helm chart. Okay. So similarly, this helm chart is hosted again on the URL. So this is the URL where this simple helm chart is hosted. Okay. And now we'll just see that how can we use this helm chart. Okay. So any one of you know helm commands? Helm repo, helm update, any idea? Okay, fine. No issues. So, and yeah, so just let's go one step back. So we did Docker run, when it executed the Docker image locally. And now if I want to use it, I have to push it into Docker Hub. Yes or no? These are the steps where you can push it to Docker Hub. Then I have started the Minikube. Command to start a Minikube is Minikube start, right? And how to add a Helm repository on the machine. So let's say if I am having local Kubernetes version running, right? I have first, before using a Helm chart, I need to add the Helm repository. Okay. So the command to add a Helm repository is Helm repo add, the name, whatever you like, and then the URL. So you can, I'll just simply copy paste it, execute it, and over here it is already exists. That is the reason why I'm giving a message that is already exists. But yeah, it will work if it is not there. To see what all Helm repositories are available, the command is Helm repo list. The very last available is this one that we added right now. Okay. Now, if I want to deploy a Helm chart manually, so as I said, there is always two ways. One is manual, another is Terraform, right? So first, let's just see how does a manual deployment of a Helm chart looks like. So the command is Helm install, the name of a release, whatever you like, then the repo name, the chart name, -f, and the values file. Okay. Now first, let's see what does this values file look like. Values file looks something like this. As I mentioned in the very beginning of the session, right? Here, and I showed you the templatized version of a YAML file as well, where you are having everything as a parameter. Now you can pass those stuff in a separate values of YAML file. You pass the values in a different file, and you just execute helm install. It will different
It will deploy all the manifest files which are kept inside that particular Helm chart. Okay. So now I will have installed to the list. Let me first uninstall the every alignment. So the command to deploy a Helm chart is helm install and then the release name and followed by the repo name slash the chart name. Over here you get the status, something was deployed, right? Now, if it is deployed, now you should be able to see and list. Over here you see that we have a latest release called to-do list pull task that we created right now. If I want to access this application, how can I access this application? I have a pod or I have a service deployed in Kubernetes. I want to access it. Port forward. That's right. Yes, the service is already a part of Helm chart. That is the reason my deployment and service both work. I'll show you. Over here you will see I have a service. I have deployment. Right. Now I just need to do port forward. What is the command for port forward? kubectl port forward svc slash and then the service name. If I open my localhost, I have this application. Yes. Now this application is running where? Sorry. Yes, it is running on Kubernetes cluster. Where is this Kubernetes cluster running? Inside Minikube on my laptop. That's it. So we saw that we deployed a Helm chart, with specific values file, and then we did port forwarding to expose it on this machine. Yes or no? All right. Now, any questions, Julia? Yes. And repo list and Helm list. Helm repo list is going to list the repo which is added. Helm list is going to show you the Helm charts. That is the list of repos. Okay. Any other questions? Okay. Now, what is the command to uninstall the Helm chart? It is helm uninstall and then the release name. Okay. So I'll quickly do that. Now let's see how can we deploy the Helm chart using. Let's see how can we deploy the Helm chart using Terraform. Okay, and if you know Terraform, we have the files are written are having the extension of .tf. Yes or no? Okay, so this is a Terraform file where in the beginning of the Terraform file you will see provider help, right? So in whenever you are executing a particular Terraform code, very first one always has to be provider, right? Where you define that
where you want to execute this Terraform code again. For example, if you want to run the Terraform code against AWS, you will use the provider AWS. GCP, provider GCP. Now, initially Terraform was supposed to create the resources and stuff, right? But with the growing popularity of Terraform, more and more providers came, the Kubernetes provider came, the health provider came, GitHub, GitLab, and there are tons and tons of providers right now available for Terraform. Okay? So, provider help, and whenever you are defining a provider, you will have to define the authentication mechanism as well, right? So, over here in this case, the Kubernetes cluster where I want to execute this this Terraform code is sitting on this machine itself, and where is the kubeconfig file is on this path. That is where my Kubernetes config file equal to this. Understood this much? Now, this is a resource, a Terraform resource. The resource name is helm_release. Okay, and so every Terraform resource has a name and then the unique identifier. Over here, you can write whatever you want. Instead of helm_deploy_1, you can write basically anything, but it should be meaningful. Okay. What are the parameters you need to pass to the resource blocks are always defined. Every single resource block available for Terraform expects inputs in a very specific manner, specific type. Okay. You cannot just pass anything randomly to a resource block. It will say this answer. Okay. So what are the inputs supported to this particular resource? Now, if I want to see what are available options, right, I'll have to go to the documentation of that particular resource. Okay. So, if you want to see, let's say, I want to deploy a Helm chart into Terraform and stuff. What I have to do? You just Google search Terraform Helm provider. You will see, get the first name. Click on that. Go to resources and you will see the Helm release resources. This is the documentation of this particular resource. Okay. Over here, you will get some examples on how to use this particular resource and argument reference. This section contains all the possible inputs to that particular resource block. Okay. So what are the possible inputs? Name, the chart, the repository, and there are many, right? Simple inputs are the name of the deployment you want to create. The repository, as I say, this is the repository which I have made to show this Helm chart. The chart within that particular repository is simple Helm chart. The version of that Helm chart is 1.0.0. Which namespace I want to deploy it? Default, atomic, true, values, and the values file. Okay. So this is a file function which will read the file on this particular path, which is values.yaml, and it will send all those contents of that file into this values block and it will execute. Okay. This is one example. Second example, if you don't want to pass a values.yaml file, can I pass it in a different way? Yes. This second example block over here, again, the parameters remains the same, but you can use something called set block, SET, where name is the name of the parameter and the value. Now, this value can be hard-coded or a Terraform variable or a local variable or anything. Basically, you can use this particular way, this method of set the parameters with the help of Terraform. You can write your own logic, whatever you want. Okay. So over here, I have created the variables and it is going to pass this. And the third example is Helm deploy 3. It's a mixture of values.yml file and the set block. What it will do, it will merge it. When I say it will merge it, it will override it. So let's say application.name, this particular parameter in values.yml will be overridden by this particular -. Okay? Understood a very simple Terraform code? All right. Let this be commented now. And this destroy the already created resources. So what is the first command? Is Terraform init. Okay. Let's just do that. It is initialized. Second command is Terraform plan. What it will do? It will help us to review. Okay. So over here you see it is saying 3 to add. 3 to add. Now how come this 3 came? Because there are 3 resource blocks in my TF code. That is the reason why the 3 to add is coming. 0 to change, nothing is changing. 0 to destroy, nothing is. Now let's just see
whether it is a correct, deployment or not. You can just verify the plan according to what you have passed. You can just have a quick look at, okay, whether this is right, whether it's wrong, everything right. If you feel confident, you can run Terraform apply. Again, it will show the plan, but with a prompt. You see, it is asking me, do you want to perform this change? If I say yes, it's going to deploy those 3 hand charts on the local Meetup cluster. Okay. Any questions still here? Yes. Yes, Terraform apply -- auto - approve. This is very dangerous. Never use it. Never use -- auto approve, especially in upper environments. When I say upper environments, staging and production. But first of all, you should never use it. But yeah, don't. Yes, when it is a part of Jenkins pipeline, that's true. Where you have to do -- auto approve in the pipeline, but make sure that there is a planned job before the apply job, right? Those jobs are manual triggered, not automated. And you review the plan first before triggering the job of apply. Simple. Any questions? So you see, the Terraform apply is completed, and my resources are created. Now I have to see what all resources it has created. The Terraform code has created. The command is Terraform state list. It will see what all things are there in my state file. It is saying that I have 3 help releases in my state file. Now, what is the beauty of Terraform? If I do Terraform apply, what it will show? What it will show? How many to change? How many to add? How many to dismiss? 0, 0, 0. Why? Because Terraform knows that it is already created. And that's the beauty of state file. If you write a Python code, if you write a shell code, if you write something else, there is nothing like state. You execute a command, it will run 10 times, it will create those 10 entities. But it is not the case with Terraform. You write a Terraform code, you did Terraform apply, it will be stored in the state. Terraform knows that it is created. I don't have to create it. Okay? So that's all from my side. And if you have any questions. Okay, thank you. Please give huge round of applause to our first speaker. I hope everyone can see the screen. Yes, right? So, how was the session? Amazing, right? Like today, like I also felt that the way he covered all the points was very self-explanatory because he started with from very scratch, right? He went like he took us from documentation, how you can reach out to the documentation, and every step was very clear. Okay, so even though like how many of you are students? Please raise your hand. Oh my God, I can see couple of raise. Almost 70% crowd is students only. Are you hearing Terraform for very first time? Okay, I can like okay, I can relate. Like things might have gone like you might not have got couple of things, but don't worry. The way he covered it was very precise and clear. So like after some time you will get to know that okay, this is the way actual way you can learn. Okay, so whatever the like utilize our keynote speaker.
okay, Varun is going to be here. So even though you are having some doubts on how you can start from scratch to learn, please utilize this opportunity in break, connect with Varun and make sure that you are like at least going like you will get some head start. Okay, so PPT will you will get, so start studying and then you will be able to make it. So that PPT or the kind of resources which he shared now was completely self-explanatory. So you will not end up in having kind of things. You will be able to cover everything which he covered. Okay. Moving on. Before going to that, I have some questions for you. So can anyone explain the Terraform commands? Which if we have to provision one infrastructure, then what are the commands which we need to follow? Can anyone tell all the files, all the commands step by step? I'm looking for a volunteer. Please. Amazing. Oh, you want to destroy it? Okay. So Terraform init, then Terraform apply, plan or apply. Okay, yeah. Terraform init, Terraform plan, then Terraform apply, and if you like kind of like this situation which you want to face, wherein you are no more caring about your infrastructure, then okay, you can have such kind of situations as well. Then one more question I have: can anyone tell me about the difference between Docker image and the Docker container? Container is a runtime. Okay. And image is a tar of the environment. That with the help of that we can deploy the content running environment. Okay. You mean blueprint or tar image? We can install blueprint and tar. Okay. Archive file. Image is the archive file that we deploy, and container we can start a container using that image file. You can set blueprint also. Okay. I am actually not agreeing with the tar file, but can I get few more volunteers for please. Okay. Okay, understood. Thank you so much for answering the questions. Now let's go ahead. Okay, so we have amazing speaker ahead. Okay, I hope actually for this will take some time. Okay. Okay, I hope I'm audible. So we have quiz coming up. So please bring up your mobile phones, and there will be a one scanner which you can scan and attempt the quiz. I'm really happy that I could see a lot of students participation in this meetup. Okay, screen is coming up. Bring your mobile phones and scan the QR code. Let's test your knowledge. It is going to be fun. Yeah, please scan it through. Just one announcement: if you want to use the restrooms, they are backside of the page.
right? But today, Varun made it very clear to understand about Docker image and container. So still, like if you didn't like you didn't got, then you can Google it about it. It's pretty, it's worth to spend some time and understand about it. So there is a Docker file from which we create Docker image and then container is created. It takes time to understand it. वो मीट ज्वाइन किया गूगल में वो उसका लिंक है ठीक है मैं देखता तब तक ये Everyone can see screen. Is it visible to everyone? Yes. Okay. Back side. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. My name is Narsing Sabne. And first of all, welcome to you all in Docker Community Day Meetup 2. And thank you to Sagar here and team that provided me the opportunity to speak or discuss the topic in front of the public. This is my first or second time, so थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप थोड़ा संभाल लेना. Today we are going to discuss on Docker Swarm. Okay. So we'll cover this topic in it's about 30 minutes. आधे घंटे में कवर हो जाएगा और दिस इज वेरी सिंपल. लास्ट में थोड़ा सा डेमो है और थ्योरी पार्ट है जो पीपीटी सिंपल. मैंने किसी को सुना था कि लाइक सिंपल व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू मेक इट वेरी सिंपल नॉट ओनली सिंपल. सो मैंने सिंपल बना दिया है लेकिन ये काफी सिंपल हो गया है, तो लाइक कॉलेज पीपीटी. तो ये कर लो. Okay. So my topic name is deploying web app using Docker Swarm. First we will cover up the Docker Swarm theory and end of like आखिर में थोड़ा सा practical ले लेंगे. Okay. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है. Okay, done. So मैंने एक शेयर सुना था कहीं, like मुझको ना रोकिए
अपना आजमाने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। सो लाइक वो सफर के लिए मैं ऐसा रजिस्टर किया है स्पीकर, फीलिंग नाइस। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो ये तो हो गया है। Next है, in this topic, we'll go through these contents like what is the Docker Swarm, key takeaways, like Docker Swarm features, advantages, disadvantages, and then Docker versus Kubernetes is a little bit different, and then demo of the session. Okay, so let's start. I want to make this session interactive, so I feel confident. Okay. ये पढ़ा आपने? Okay, what is Docker Swarm? Everybody knows what is Docker container and little bit about. मैं अभी ये बताने जा रहा हूँ what is Docker Swarm. Docker Swarm क्या है? क्या है Docker Swarm? तो it is a orchestration tool like Kubernetes बोल सकते हैं, लेकिन difference है. It is an orchestration tool to manage and deploy containers. Okay, it is designed for easy to access, easy to make cluster, manage cluster and containers. Like काफी easy है, containers है, उसको manage create करना है और cluster बनाना है, तो इसके लिए Docker Swarm यूज करते थे। अभी काफी competition आया है now in the market, like too much competition with like Kubernetes, Docker Swarm and other tools, so Docker Swarm कोई इतना यूज नहीं कर रहा है। सो ये इजी टू यूज है और ये मैनेजिंग क्लस्टर क्रिएट करता है और कंटेनर मैनेज करता है, इतना ध्यान रखिए, सिर्फ सिंपल थिंग है। इसमें क्या होता है, इन दिस Docker Swarm there is one manager node and other worker node, like one system in the Docker Swarm we can connect, we can make cluster with the 2-3 machines, physical or virtual machines, instances. We can create like different machines and we can create combine and make the cluster, so they can easily accessible and high availability. Okay, so key takeaways क्या है इसमें? It is a group of either physical or virtual machines. Okay, इसमें क्या होता है, 2 और 3 और कितने भी 7 7 और 8, so this is virtual और physical जो machines है, nodes है, containers, तो उसका एक कंबाइन होके क्लस्टर बनता है जिसमें हमें यूज करने के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, उसके फीचर्स है। तो इसमें एक मैनेजर है और रेफर्स एज अ वर्कर नोड। इसमें एक मैनेजर है कंट्रोल करने के लिए और बाकी 2 3 4 जो है हमें जितना चाहिए वो हम वर्कर नोड कर सकते हैं। मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी ज्यादा मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, सो okay, Docker Swarm lets you connect container to multiple hosts. ज्यादा जो होस्ट है उससे एक दूसरे से कनेक्ट करता है, कनेक्ट इच अदर। एंड इसमें Docker Swarm has 2 types of services, replicated and global. कितने सर्विसेज है? 2 टाइप। तुमको समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है मेरा? पीछे अंडरस्टैंड हो रहा है हिंदी में? यार डिलीवरी का भी मेरा थोड़ा गलत है कुछ, लाइक हाँ ठीक है, ओके कोई दिक्कत। इसमें 2 सर्विसेज है, रेप्लिकेटेड एंड ग्लोबल। रेप्लिकेटेड में क्या होता है, सिंपल है, Docker Swarm अभी बताया क्या है, कंटेनर लाइक मशीन से अलग अलग कनेक्ट होता है, क्लस्टर बनता है, उसमें 2 सर्विसेज होते हैं Docker Swarm में, एक है रेप्लिकेटेड, दूसरा है ग्लोबल। रेप्लिकेटेड में क्या होता है कि हमें कितने कंटेनर्स में वो चाहिए रेप्लिकेशन, कंटेनर्स क्रिएट करना है एट ए टाइम, 1 कमांड में हम दे सकते हैं 4 5 7 8 मुझे चाहिए, तो हम वो उतना उसके रेप्लिकेट्स बना सकते हैं। और ग्लोबल में क्या होता है, अगर कोई एक ऑल नोड्स में एक सर्विस चाहिए मुझे, तो हर बार हर नोड में हर कंटेनर से जाके वो सर्विस एक्टिवेट क्यों करना है, तो मैं एक ही बार करके मैनेजर नोड से सो ऑल कंटेनर्स को जो डेली यूज के लिए मुझे डेली ऑपरेशंस है, मॉनिटरिंग है, लॉग मैसेज है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो क्या होता है कि एक में ही सेट करके वो पूरे कंटेनर्स में वो एक्टिव, ऑल अवेलेबल नोड्स में वो एक्टिव हो जाता है, तो ये ग्लोबल है। और रेप्लिकेटेड मतलब जितने चाहिए उतने हम रेप्लिका बना सकते हैं उसके। ये हो गए 2 सर्विसेज, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। इमेज इतना क्लियर नहीं है, लेकिन एक मैनेजर है और लाइक फिजिकल और वर्चुअल मशीन्स है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करके क्लस्टर बना के हम Docker Swarm कर सकते हैं एक दूसरे में कमांड से इंस्टॉल करके, लाइक डॉकर इंजन इंस्टॉल करने के उसके बाद 2-3 कमांड से इट इज प्रीटी इजी।
ओके, डॉकर स्वार्म में फीचर्स इसके क्या क्या फीचर्स है? इसके फीचर्स है ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग। इसमें ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग में वीआईपी, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ। अभी क्या है, मैं लास्ट टाइम व्हेन आई अटेंडेड लास्ट मीटअप ना, सो काफी लोगों ने काफी कंटेंट दिया, लेकिन उसके जाने के बाद मैं प्रैक्टिस भी नहीं की। तो मेरा ये मोटो है कि उस कंटेंट में जो इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम यही रिवाइज करें, यही समझ जाए, अगर घर जाके भी याद नहीं तो हाँ मीटअप जाके मैं इतना तो सीख लिया। तो दैट इज माय मोटो, नथिंग एल्स। सो ऑटोमेटिक लोड बैलेंस, इसमें फीचर्स है ऑटोमेटिक लोड बैलेंस है। उसमें जो एक है वर्चुअल आईपी है। इसमें whenever we create the container ना, it assign automatically virtual IP. So ये क्या करता है, जब भी क्लाइंट है कोई एक्सेस करने को चाह रहा है कंटेनर या कोई भी सर्विस, तो क्या करता है वो वर्चुअल आईपी को पहले ये करता है, उसके बाद वो लोड बैलेंस होता है, जैसे कोई भी लोड बैलेंसर करता है। सेकेंड है ऑटोमेटिक सर्विस डिस्कवरी। इसमें है ऑटोमेटिक सर्विस डिस्कवरी में जब भी कोई हम सर्विस क्रिएट करते हैं, उस सर्विस को एक डीएनएस असाइन होता है। तो क्या करते हैं, जब भी हम सर्विस चाहिए हमें कोई, तो बार बार उसे ढूंढने की ज्यादा तकलीफ होता है। सो इट कैन डिफिकल्ट, सो वी कैन जस्ट ऐड डीएनएस ऑफ दैट सर्विस and then we can go through that service. So we can connect with that service with any container on any node. Okay. So it is already clustered. So do you understand what कितने सर्विसेज है इसमें? अभी सर्विसेज कितने कौन से ओके, और इसमें फीचर्स में पहला फीचर्स कौन सा है? ऑटोमेटिक लोड बैलेंस। ओके, जो लोड बैलेंस करता है। दूसरा कौन सा है? देखिए बताइए। ओके, और तीसरा है रोलिंग अपडेट। काफी है 4-5, लेकिन मैंने 3 ही लिए हैं। तो इसमें थर्ड वन है रोलिंग अपडेट्स। रोलिंग अपडेट्स में क्या होता है, जो भी नए अपडेट आए, तो ये जब नए अपडेट्स आते हैं, न्यू अपडेट वन बाय वन ये ऑटोमेटिकली अगर सब अपडेट करेगा कंटेनर्स, तो ये क्या डाउन हो जाएगा मशीन, जैसे अगर कोई भी मशीन डाउन हो रहा है, तो ये क्या करता है, अपडेट रोलिंग अपडेट वन बाय वन फीचर अपडेट करता है। तो मतलब एक डाउन है तो ये कंटिन्यू रहेगा, एक डाउन है तो ये कंटिन्यू रहेगा, फॉल्ट हो रहेगा। ओके, तो 3 सर्विसेज है, ये सिंपल सर्विसेज कवर किए। पहले सॉर्म किया, व्हाट इज सॉर्म क्या है, उसके बाद सेकंड थिंग क्या है, जो क्लस्टर बनाना है, उसमें 2 सर्विसेज है, रेप्लिकेटेड ग्लोबल। उसके आगे फीचर्स है लोड बैलेंसिंग, सर्विस डिस्कवरी एंड रोलिंग अपडेट्स। ये 3 सिंपल फीचर्स होते। ओके, हाउ डज डॉकर स्वार्म वर्क? सो इसमें 4-5 स्टेप्स है। ये काफी अभी मैंने थ्योरी लिखा है, लेकिन उसमें लाइक जैसे डॉकर इंस्टॉल करते हैं, लाइक दिस है। शुरू में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज द स्वार्म। एक अभी मैनेजर जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, कोई अभी हमें 3 इंस्टेंस लेना है, तो 2 हम एज अ वर्कर नोट करते हैं और एक एज अ मैनेजर करते हैं। ओके, तो इस मैनेजर में हम ये करते हैं इसको कि इनिशियलाइज करते हैं डॉकर स्वार्म का कमांड डाल के। तो ये क्या होता है, डॉकर स्वार्म इनिशियलाइज होता है, और उसके आगे एक फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजिंग द स्वार्म, सेकंड इज जॉइनिंग नोड्स टू द स्वार्म। So when we initialize the swarm, so we get the tokens. So we can copy that tokens and paste on the nodes or the worker nodes. So the nodes can connect to manager. So manager and workers connect हो जाएंगे tokens. Third thing is defining services. कोई हमें services चाहिए, then we'll see in our session like in the demo कि कोई service है, Nginx है या कोई भी है, तो हम वो सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं। सर्विस क्रिएट करके जो भी चाहिए सर्विस हम ले लेंगे। उसके आगे क्रिएटिंग टास्क, जो टास्क है उसमें टास्क में आएगा व्हाटएवर, जो कोई भी टास्क रहेगा। और 5वां है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। उसको जो टास्क किए वो सर्विसेज क्रिएट है कि वो मॉनिटरिंग हो रहा है और लॉग उसका लॉग सब हो रहेगी, तो उसमें देखेंगे। सिंपल 5 स्टेप से इनिशियलाइज होगा, नोड कनेक्ट करेंगे, सर्विसेज, टास्क एंड मॉनिटरिंग, कोई भी जैसे वर्क फ्लो होता है जैसे। इस फॉर्म इसके बेनिफिट्स है, ये काफी फास्ट हो रहा है लेकिन इजी है। तो ओके, इसके बेनिफिट्स जो है सिंप्लीफाइड कंटेनर मैनेजमेंट। तो ये जो कंटेनर मैनेजमेंट है, अभी काफी टूल्स है, वेरियस टूल्स इन मार्केट, बट ये काफी सिंपल है। अगर फ्रेशर के लिए कभी सीखना है,
इसकी कुबरनेटिस थोड़ा ज्यादा ही है। सागर सर ने कुबरनेटिस का किया है, लेकिन ये थोड़ा इजी है सीखने के लिए। हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, एज हमने किया कि मैनेजर और नोड्स इंटरकनेक्टेड है, ईच अदर क्लस्टर बन गया, तो ये हाई अवेलेबिलिटी हो गया। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, जैसे AWS है, Azure है, और बाकी के जो क्लाउड सपोर्ट क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो सपोर्ट करते हैं, तो वो मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट हो गया। तो इंटीग्रेशन विद डॉकर इकोसिस्टम, इंटीग्रेट है, डॉकर रजिस्ट्री है, डॉकर हब से है, तो ये डॉकर के जो इकोसिस्टम्स है इससे कनेक्टेड है। और इसका बेनिफिट ये है कि इसको कम्युनिटी इतना लाइक वो बेनिफिट में नहीं आएगी, सॉरी। ओके, इसके ड्रॉबैक है कुछ लर्निंग का। अभी जैसे ये सीखना है, जैसे मैंने बोला सिंपल है, बट इसको बेसिक कुछ तो आना चाहिए, डॉकर इंजन क्या है डॉकर बेस है, तो डॉकर स्वार्म के लिए नोड्स कंटेनर्स थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो यू कैन से एज अ ड्रॉबैक। सेकंड थिंग, लिमिटेड फीचर कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। कुबरनेटिस ये थोड़ा सा ओल्ड है, इतना फीचर्स नहीं है, ये ओपन सोर्स ही है लेकिन इतना सोर्स नहीं है, तो थोड़ा ये एज ए कुबरनेटिस एज कंपेयर टू कुबरनेटिस ये थोड़ा लिमिटेड फीचर्स है, ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता, और लिमिटेड कम्युनिटी सपोर्ट है। जैसे कुबरनेटिस अगर हर कोई कुबरनेटिस की बात कर रहा है, तो डॉकर स्वार्म का इतना आइडिया नहीं है, सिमिलर टू है लेकिन इतना आइडिया नहीं है, तो लिमिटेड कम्युनिटी है, कोई दिक्कत है कुछ भी हो तो कम्युनिटी तो लेस कम्युनिटी। ओके, दिस इज अ ड्रॉबैक। There are key difference: no auto scaling, good community, no community, easy to start cluster, difficult to start cluster. So you can understand this. बोलते हैं ज्यादा वर्ड्स से एक टीचर बोल देता है और अंडरस्टैंड हो जाता है, अगर मैंने कुछ समझा नहीं तो इसे आपको थोड़ा समझ आएगा। ये भी कुबरनेटिस और डॉकर स्वार्म। अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, ये भी फिनिश नहीं हुआ है, अपना डेमो बाकी है। आपको कवर हो गया ना कि क्या है, आइडिया आ गया कि नहीं? यस, ओके, प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो साथ में कौन कौन कर रहा है? 4-5 स्टेप्स है, कर देंगे तो थोड़ा इजी तुरंत हो जाएगा। So what is the requirement for that? Some software needs to be installed. Yeah, not software, like if आपके पास Ubuntu है और कोई मशीन है या तो AWS के अपने इंस्टेंस पे कर सकते हैं, इस डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। डॉकर इंस्टॉल एक कमेंट भी करना। It works on Docker Linux. Yeah, open source. काफी इजी और छोटा है, हर कोई कर सकता है, सिर्फ डॉकर इसको इंस्टॉल होना चाहिए और AWS इंस्टेंस रहेगा तो अच्छा है। So I have already created 2 instances, manager 1 or W1. So we will create 1 instance. We need 3 instances of Linux. Yeah. So that's the thing I'm asking. How many? No. So I have 1 instance. So can I do the practical on 1 instance? Yeah, you can do 1 instance, but you need to specify the nodes and all. So I have prepared for that like 3 different machines. So interconnected. So how can they interconnect and make the cluster? I have already prepared, so I have already created security group, so I will select that. So now I have 3 instances. I have 1 document.
पेपर डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हाँ इसको ड्राइव पे अपलोड है क्या ड्राइव पे अपलोड कर लास्ट टाइम यूट्यूब पे किया था हाँ लेकिन वो हाँ ठीक है लिंक मैं इसे देने करना ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसे करता हूँ इसको ड्राइव मीटअप पे करते हैं अच्छा सो ये प्रैक्टिकल अभी नहीं कर मैं खुद दिखा रहा हूँ बस हाँ ये शेयर बाद में करते हैं बस दिखा दो ये शेयर करते हैं बोल देना गिटहब रेपो मिल जाएगा ठीक है चल So I have 3 instances. So in that I have created security group and Students, please pay the attention because it is hands-on. Okay, he is going to perform in front of you. So even though you have not performed, but you will be able to visualize and even see how things are happening. So it is actually pretty difficult sometimes making that configurations. So pay close attention, and if you have some doubts, feel free to ask. I hope everyone can see the screen, right? Okay, little bit zoom more. Yeah, I hope everyone can see the screen now. Okay, please go ahead. Feel free to interrupt him. okay, so I have created 3 instances, 2 as a worker and 1 as a manager. So I will configure that. I already created security group, so I have added in that. Which work on 2377 port number and 8001. Okay. So first, the first step is install Docker. So I will share this document to you, but we can install manually. Understand the high level steps which are present. Anyways, as he's going to share his documentation, you will be able to perform. Just understand the workflow he's going to perform. Now I am installing the Docker. I'll start the service. Okay. See, this is running or not? Hello. We have installed Docker. First step is install Docker. Now open the SOM manager. कोई भी एक मशीन को हम एज ए मैनेजर कंसीडर करेंगे और एज ए वर्कर करेंगे. सो मैं मैनेजर का कॉन्फ़िगर करता हूँ. सिंपल कमांड है डॉकर स्वॉर्म इनिट. हमने देखा कि इनिशियलाइज करना है पहले स्वॉर्म.
Okay, so we have initialized, SOM initialized current node. Now is a manager. तो ये टोकन देगा इसे कि लाइक कोई भी अगर वर्कर का हमें नोड डिफाइन करना है तो ये टेक टोकन हम उस वीएम में जाके पेस्ट करेंगे. सेकेंड स्टेप है एम्प्टी सॉम क्रिएट करेगा. आफ्टर इनिशियलाइज फॉर्म सॉम मैनेजर नोड देयर इज अ वन की जनरेटेड ऐड नोड्स एज अ वर्कर. Yeah. The Docker should be installed. Just 10 minutes. I'm installing Docker on the all machines. Okay, so I have installed Docker on the all three machines, and in the manager I have configured as a manager that one machine. Now and that that generated token will copy paste on the worker node. So it will connect each other. Okay, no, when we initialize now, so that node will be considered as a manager. When we run the Initialize, yeah, SOM initialize. All three machines should be same configuration or manager for that. No, not like that. So, yeah, if you want to consider any machine as a manager, so if any workload or anything, so resources can be different. No issue. So we'll copy, we'll paste that token. Okay. What I have done now, guys, are you listening? तो मैंने क्या किया अभी एक मैनेजर थ्री इंस्टेंसेस लिए AWS पे, तो एक को मैंने एज ए मैनेजर ये किया कंसिडर किया और दो जो है अदर उनको वर्कर किया. मैनेजर नोड पे मैंने SOM इनिशियलाइज किया और जो टोकन मैंने बोला था कि टोकन मिलेगा और जो टोकन की है वो आई हैव पेस्टेड दैट ऑन द अदर वर्कर्स नोड. So here you can see this is a node join as a SOM as a worker.
This is also worker. This is manager. So next step is so we can check now the all nodes by this command. So now you can see here all the 3 nodes are active. One is a leader and other 2 are workers. On the only manager machines, I have considered as a manager, and that token generated token I have considered on the other workers. So now it's interconnected to each other. Next step is so now we need to create one service. So we'll create a Django service. सर्विस क्रिएट हो रहा है। जो लर्न विद शुभम है उसका मैं रेपोसिट किया है। तो डेवऑप्स के काफी रिसोर्सेस हो, जैसे सागर सर कहते हैं वो भी काफी रिसोर्सेस और शेयर करते हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी में। Now we can check the service has been created or not. Okay, Django service created. Replicated 3. इस कमांड में हमने रेप्लिकास 3 लिखा था, तो ये 3 कंटेनर पे सर्विस ऑटोमेटिकली हो गया क्रिएट। When we create any service that creates automatically container, एक सर्विस का एक कंटेनर बनता है जब सर्विस क्रिएट करते हैं। As we already copied the code from the GitHub, so now we can check this is running or not. Copy. This is working as same as if we do for port 8, we have defined 8001. Okay, from the worker. So you have used public IP. So if you use private IP, yeah, for the worker we can use private IP. You replicated the service on all 3 instances, but if you want to, like, let's say you want to replicate on 2 of them, can we decide which 2, or we will be just one manager and one worker? In replicated क्या करता है, अगर समझो आपके पास 5 कंटेनर्स और आपने जितने कंटेनर्स है वो उस पे ही करेगा। अगर आपने ऑलरेडी रेप्लिका ज्यादा लिखा है तो उस पे नहीं करेगा, अगर 5 कंटेनर्स है आपने इस रेप्लिका 6 लिखा है तो 6 नंबर का नहीं लेगा, 5 पे ये करेगा और 1 छोड़ देगा। समझ रहे हो? Like हमारे पास 5 कंटेनर्स है, but we want to replicate on 4 of them.
तो भी कर सकते हैं एक मैनेजर करके और बाकी चूज कर सकते हैं Okay. हाँ कि अगर आप हेल्प पे जाएंगे ना ये मैं एज ए सिंपल ले रहा हूँ इसमें अगर हेल्प पे जाएंगे ना तो आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे एडवर्टाइज कौन से नोट पे करना है इसमें हाइफन एडवर्टाइज करके उस आपको इंस्टेंस का आईपी डालोगे तो वो एज अ वर्कर डिफाइन होगा और अगर मैनेजर का डालोगे आईपी हाइफन एडवर्टाइज तो मैनेजर हो जाएगा ओके सो क्या बोल ये ऑटोमेटिक लोड बैलेंस हाँ तो इसमें स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है ऑन व्हाट पैरामीटर्स इसमें लोड बैलेंसिंग में ना राउंड रॉबिन करके कुछ तो उसमें एक एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन या राउंड रॉबिन जो है वो इसमें यूज होता है जो क्या करता है जो लोड है उसका वो एल्गोरिदम काम इसलिए करता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना लोड कोई भी थिंग है तो वो उस पे उस एल्गोरिदम पे काम करता है या या हम कर लाइक मुझे इतना आइडिया नहीं मतलब उतना डीप गया नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं शायद इतना सब कर आई डोंट हैव लाइक ज़्यादा नहीं यूज़ के बारे में लेकिन बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन यूज़ करते हैं ओके सो इनकॉग्निटो लाइक ये हो गया है सिंपल 4 to 5 स्टेप्स में ये वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया है विद डॉकरस्टॉर्म एक हमने मैनेजर में सिर्फ किया बाकी ऑल सबके हो गए ये स्मॉल ये सिंपल और स्मॉल था छोटा स्टेप्स था लेकिन उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है काफी कमांड्स है काफी है तो हम लाइक डॉकर हाइफन हेल्प और एनीथिंग हम कर सकते हैं अगर हमें स्वॉर्म कोई नोड निकालना है कि लेफ्ट करना है तो वैसे हम कर सकते हैं जूम कहाँ पे अगर कोई नोड को हमें क्लस्टर से या स्वॉर्म से निकालना है तो सिंपल हम वो क्लस्टर पे जाके वो कमांड प्रेस करेंगे डॉकर स्वॉर्म में सो ये हो जाएगा लाइक ये अभी मेरा हो गया है लाइक प्रैक्टिकल और ये 4 to 5 स्टेप्स में कॉन्फ़िगर करना था और ये काफी छोटा एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है इसमें लेकिन मैंने ये अपने लिए और मेरा बस है इसलिए मैंने काफी सिंपल ये डॉकर स्वॉर्म क्या है इन जनरल उसकी फीचर्स क्या है बेनिफिट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है नेक्स्ट सिंपली हम वेब एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं विद डॉकर स्वॉर्म सो दैट्स फ्रॉम ऑल माय थैंक यू गाइस